And therefore all these politicians are a set of rogues and rascals who have looted the country, who divide the people on caste and religious lines for their vote banks, and they deserve to be shot. Can we say it is the other parties divide people on caste lines? I make no difference. All the politicians, they are rogues and scoundrels. They have. I mean, it's so sad. Such a great country is in the hands of gundas. These are nothing but gundas, criminals. And they all deserve to be hanged. All our politicians. This country is heading for a revolution. Just imagine, prices are shooting up the roof. 200 rupees a kilo dal. What is the price of onions? What is the price of mustard oil? Unemployment is increasing. Massive unemployment in the country. The crisis, it is all heading towards a crisis. And there will be a revolution in this country. So you mean there can be one building which can be repaired or renovated. There can be another building which is so dilapidated that you have to, it requires demolition and fresh construction. So there is no construction without destruction. You have to destroy this system. It is outdated. Our constitution has exhausted itself. All our institutions have collapsed. Do we have a parliament? The whole monsoon session was washed out. Shouting, screaming, there was no business transacted. I am sure that is going to happen in the winter session and thereafter in the budget session. Parliament is finished. It will never work now. Whoever is in opposition will not allow the parliament to function. When BJP was in opposition, they did not allow parliament to function. Now, Congress and others are now, they will not allow it. Parliament is finished. Judiciary, it takes 25, 30 years to decide a case finally. Is this a judiciary or a joke? And half of the judiciary has become corrupt. I know, I was part of the system. Bureaucracy is largely corrupt. Everything has collapsed in this country. Now then, it is all a empty shell, hollow. So it requires a revolution. Real meaning is complete change. We have to have a just social order where the standard of living of the people is rising. You see, the test of every system is one and only one. Is the standard of living of the masses rising in that system or not? Whether you call it capitalism or socialism or communism or any ism, the test is only one. Is the standard of living of the masses rising or not? So we have to create a system in which the standard of living of the masses keeps rising. That can only come by a revolution. Therefore, the solution to our country's problems do not lie within the system, they lie outside the system, which means the system has to be destroyed. This system will not allow progress to take place. You are seeing prices are rising, unemployment is rising. All this talk of Vikas has proved to be hollow. Where is the development? So it was all a fraud. Yes, sir. See, both are dangerous and they are complementary to each other. This is a country of great diversity. So many religions, so many castes, so many languages, so many ethnic groups. So the only way to keep united and progress is secularism and giving equal respect to everybody. So communalism is an enemy of this nation. All those who are communal are traitors to this nation, enemies. And similarly, casteism is also an enemy to the nation. Corruption is also an enemy to the nation. Measures have to be taken, which is not possible within the system. It is when some kind of, like in the French Revolution, when it came, then they guillotined all these aristocrats. They cut off their necks. You have to do the same, because these fellows, these politicians are incorrigible. They cannot be reformed. They have to be shot or hanged. They will not change them like a leopard who cannot change his spots. These politicians will not change their nature. They have no genuine love for the country. They only want their vote banks, for which they spread hatred, polarize people. Are they not enemies of the country?
अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, फार्मर्स डिस्ट्रेस खत्म हो जाएगा। राम ये सब इलेक्शन के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है इसीलिए चिल्ला रहे हैं राम मंदिर राम मंदिर। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, इन द ओरिजिनल रामायण ऑफ वाल्मीकि जो संस्कृत में है, उसमें राम इज नॉट अ गॉड, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज अ प्रिंस हु लेटर बिकेम अ किंग। वो 2000 साल के बाद इन रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास he becomes a god. He is transformed from a human being into a god. But in the original Ramayana, in Sanskrit of Valmiki, he is not a god. आप किसी संस्कृत के स्कॉलर से पूछ लीजिए। तो जब ह्यूमन बीइंग है तो उसका टेम्पल क्या बना रहे हो? टेम्पल तो देवी देवता का बनाया जाता है, इंसानों को थोड़ी बनाया जाता है। तो अगर लोगों ने पढ़ा नहीं है ओरिजिनल रामायण इन संस्कृत पढ़ा नहीं है, अरे आप लोग पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, इधर उधर हवा में तीर मार दिया कहीं। आप पढ़ लीजिए ओरिजिनल रामायण इन संस्कृत, राम इज नॉट अ गॉड एट ऑल। तो उसका मंदिर क्या बना रहे हो जो है ही नहीं भगवान को? देखिए ये लोकतंत्र यहाँ का फर्जी लोकतंत्र है, कोई लोकतंत्र नहीं। देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है मेजोरिटी वोट पे, और मेजोरिटी है कास्टेस्ट और कम्युनल। तो कास्टेस्ट और कम्युनल रूल हम पे हुकूमत करें। देखिए टू मच डेमोक्रेसी इज ऑल्सो बैड। आपके 80-90% ऑफ पीपल आर फुल ऑफ कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, भरा हुआ है, गोबर भरा है सर में। देखिए आप लोग प्रोफेसर हैं इस यूनिवर्सिटी के, चलिए मैं आपका अभी टेस्ट ले लेता हूँ, बहुत बड़े प्रोफेसर बन के आए हैं ना, अभी टेस्ट ले लेता हूँ। आपकी बेटी अगर दलित से शादी करना चाहेगी, आप राजी होंगे? कभी नहीं होंगे, मर्डर कर देंगे उसका। दलित लड़का अगर नॉन दलित लड़की, चाहे अपर कास्ट चाहे ओबीसी से इश्क करे और शादी करना चाहे, ही इज इनवाइटिंग डेथ सेंटेंस ऑन हिमसेल्फ। मेनी ऑफ देम आर मर्डर्ड, ऑनर किलिंग हो जाएगी, आपकी प्रोफेसरी सब रह जाएगी जब आपकी लड़की कहेगी दलित सब करके। तो आप न समझिए कि आप बड़े पीएचडी लिए हुए हैं और कोट और टाई पहने तो बड़े एजुकेटेड। मैं आपको ज्यादा एजुकेटेड नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप में भी यही कूड़ा भरा हुआ है, कास्टिज्म, जातिवाद, सर में गोबर भरा है आपके भी। ये ना कहिए बड़े एजुकेटेड हैं। देखिए एजुकेशन है कि ये टेस्ट ये है, आप में कास्टिज्म भरा है कि नहीं? ट्रूथ इज 95, मैं 100% नहीं कहता, 90-95% आप लोग प्रोफेसर्स के सर में ये भरा है कास्टिज्म। यू विल नॉट, वो भाग जाए लड़की घर छोड़ के वो अलग बात है, बट आपसे इजाजत मांगे आप कभी नहीं देंगे, क्योंकि आप नीच मानते हैं दलित को। सच्ची बात है कि नहीं? आज भी 71 साल हो गए हैं आजादी के, इवन टुडे यू रिगार्ड दलित्स एज नीच। ये सच्ची बात है, आपका बड़ा पिछड़ा समाज है, यू आर अ वेरी बैकवर्ड कंट्री। देखिए ऐसा है, आपके मीडिया के जो मालिक हैं, आप तो कर्मचारी होंगे, है ना? आप कर्मचारी हैं? तो जो मालिक हैं दे आर बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन गवर्नमेंट को नाराज नहीं करना चाहता है, क्योंकि नाराज किया तो गवर्नमेंट 20 तरीके से परेशान कर सकती है, इनकम टैक्स नोटिस और पोल्यूशन नोटिस और ये नोटिस वो नोटिस। तो मालिक जो है वो नहीं चाहेंगे गवर्नमेंट को परेशान करना, तो चमचागिरी करेंगे गवर्नमेंट की। तो लिहाजा आपको भी चमचा होना, नहीं तो आपकी नौकरी गई। बहुत बड़े आप सीना तान के आए हैं जर्नलिस्ट, और ज्यादा आपने बकबक किया तो आपको मालिक निकाल देगा नौकरी से। तो यू डेयर नॉट, आपके भी बीवी बच्चे ना, उनको खिलाना है आपको, क्या खाओगे अगर नौकरी चली गई? ये माफ करिएगा, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर द फ्यू मीडिया पीपल लाइक पी साइनाथ, जिसने डिस्क्लोज किया था सब फार्मर सोसाइटी का, 2-4 हैं, अदरवाइज मोस्टली आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द मीडिया। आप सब बिके हुए हैं भाई। क्या हो रहा है टीवी तो मैं देखना बंद। आपके गेस्ट हाउस में मैं आया, थैंक्स टू डॉक्टर बहुगुणा, तो आई हैड अ टीवी इन माय रूम, तो आफ्टर 1 ईयर आई हैव सीन टीवी, मैं देखना बंद कर दिया मैंने। क्या नॉनसेंस चल रहा है। एक वो लॉर्ड भाऊभाऊ उनका नाम रखा है मैंने, अब समझ सकते हैं आप कौन है।
वो एक लॉर्ड हो थे ना, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नाजीज के लिए ब्रॉडकास्ट करते थे, उन्हीं के नाम पे मैंने लॉर्ड भाव नाम रख दिया उनका। आप समझ सकते हैं किसका मैं इशारा किधर है। तो कैसे बिहेव करते हैं, चम नहीं है, यू आर ऑल सोल्ड आउट, सो द लेस सेड अबाउट यू द बेटर। अब कोई इशू मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ मीडिया के बारे में, मुझे बहुत दुख होता है। जो मीडिया को करना चाहिए